everyone. A very good evening to all our viewers. Today, we have with us in our studio a very young, dynamic lady called Jasmine Kaur from Amritsar. Jasmine is a business transformation coach. In fact, I want her to introduce herself to all our viewers today. Over to you, Jasmine. And on behalf of Soil Cup, I welcome you to this show. And my name is Sarla. So let's get going. Thank you so much, Sarla, and it's a pleasure to meet you over here. So Thank you. my name is Jasmine, and I'm a business transformative coach. Basically, I help SMEs and MSME owners for their transformative growth and long-term success. It's a two things because मुझे ये लगता है कि जब एक इंसान लंबी रेस का घोड़ा बनने की कोशिश करता है ना, तो उसके पीछे उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. So that foundation we help them to build up because उसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं. Their core values, their teams. I won't say teams, sorry, let me rectify it. It's like a high performing teams. So this is all what we do as a business coach. And if I introduce my experience, I work nationally, internationally into IT and gaming sectors. So उन 12 years के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा, कैसे कंपनी के कल्चर को हम रीबिल्ड कर सकते हैं, कैसे हाई परफॉर्मिंग टीम्स को क्रिएट करते हैं, एंड कैसे हम स्मॉलर टीम्स के साथ भी हायर सक्सेस को अचीव कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड इन इंडिया एज वेल, क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्टअप्स है ना, दे नो हाउ टू इनोवेट द प्रोडक्ट्स, बट हाउ टू बिल्ड अ ग्रेट कल्चर, वहां पे कहीं ना कहीं हमारी जो कमी जरूर है वो रह जाती है. Right. So over to you, I guess. Jasmine, before you go forward and answer other questions, so a little bit about your life. How did you start? Where did you start? आपका education जो है थोड़ा और um, you know deeply समझा सकते हैं Okay. लोगों को कि आपने क्या किया था? What did you study? Where did you study? And how was your life while you were studying? क्या आपने जो पढ़ाई किया था बस उसी में आगे बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का भी किया था, या how did you change your track? Can you just share with all of us? Definitely. It's amazing, I guess. And मेरी जर्नी से बहुत लोग इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं. I know that because I always get that compliment. I won't say that I started. I belong to a village, small village, जहाँ पे कई लोग ऐसे भी आके बोलते थे, यार कैसे एरिया से निकल के आए हो. So, but since childhood, मेरा एक belief था, when I completed my 10th, I want to be a company secretary first of all. वो चीज मुझे ना बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींचती थी कि I want to work with the bigger MNCs. But unfortunately, there was a time my parents said, no, you have to pursue with the computer science. So I firstly did my computer science diploma in 2003. वहां से करने के बाद वो अमृतसर में ही था, बट ऑफ कोर्स आई वोंट स्टॉप देयर. मुझे ये था कि नहीं, मुझे मेरे ड्रीम्स बड़े दिखते थे हमेशा. देन माय टीचर्स एंड एवरीबॉडी स्टार्ट सेइंग कि नहीं, यू हैव समथिंग डिफरेंट, तुम यहाँ पे मत रुकना, गो फॉर बीटेक. सो मॉम वाज अ सिंगल पेरेंट, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि कहाँ से अरेंजमेंट्स होगा, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे लाइफ में. बट यस, आई स्टार्टेड सीइंग, कहते हैं ना, वो एक विजन था कि मुझे बीटेक करना. That's all. So I got scholarship from USA based foundation, and I went to Gurgaon for my higher studies. I did my engineering in 2009, and afterwards again एक test हुआ, that is like COVID तो नहीं था उस time पे, but 2009 में market में problem चल रहा था, so there was no jobs after graduation. तो वहां पे again एक test था. I got the offer as a developer, बट मुझे मेरे ड्रीम्स के पीछे भागना था. तो अगेन वहां पे मेरा एक बिगर लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया कि नहीं, आई वांट टू बी ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन. तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, दे डू बेसिकली, दे हैंडल ऑल डेटा ऑफ द कंपनीज. जहां से कंपनी के अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, दे आर रिस्पॉन्सिबल. सो वो जर्नी एज अ प्रॉपर टेकी गाय से स्टार्ट हुई. बट देन आई गॉट द एक्सपोजर to
मीट डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स, जहां से मेरे आगे बढ़ने की ज़ील बढ़ती गई. आई वोंट स्टॉप देयर. सो माय फर्स्ट जॉब वाज इन 3i इन्फोटेक एज अ डीबीए. तो वहां पे मैं प्रोडक्शन डेटाबेस हैंडल करती थी. वहां से मेरा क्लाइंट मैनेजमेंट का जर्नी स्टार्ट हुआ. First job, within a 2 months, I got the chance to meet a Maharashtrian taxation department person, and they was my first clients. So मेरे को Right. एक्सपीरियंस नहीं था, बट मुझे लोगों को आई डोंट नो कि कैसे वो बात करते थे, तो आई कैन इजिली एक्सप्लेन देम, ना टेक्निकल चीजों को कैसे इजी करके बताना है. तो दैट वाज अ स्किल. वहां से जर्नी फिर स्टार्ट हुई. देन आई गॉट प्लेस्ड इन सिंगापुर. फिर वहां पे जाके साउथ ईस्ट एशिया में काम करने का मौका मिला, डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स के साथ. और एक्सेल वाज माय ड्रीम कंपनी. एक टाइम पे उनके साथ काम किया. माइक्रोसॉफ्ट, वीएमवेयर, जितने भी बिग जायंट्स है उन सबके साथ हमारे पार्टनरशिप के अंदर हम लोग काम करते थे. तो आई वाज अ इम्प्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट एज वेल एज अ रीजनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर. सो वहां से मेरी मैनेजमेंट की जर्नी स्टार्ट होती है. सो Right. मुझे स्टार्टिंग से ही ऐसे मौके मिलते गए जहां पे मैं एक प्रोफाइल पे नहीं टिक पाई. सो आई वाज लाइक इनटू ऑपरेशंस, आई वाज इनटू प्रोजेक्ट हैंडलिंग, आई वाज इनटू आईटी. सो मल्टीपल चीजें चल रही थी. सो Right. आई गेस इन 2016 एक मेजर ब्रेक आया, एंड दैट वाज अगेन शिफ्टिंग मोमेंट. तो वहां से मैंने बिजनेस को स्टार्ट करना शुरू किया. तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड विद दिस आइल्स बिजनेस. जो Which आइल्स business? करवाते हैं ना, आइल्स ट्रेनर, आइल्स आइल्स की ट्रेनिंग का. I train. Okay. Okay. तो आई वाज नॉट अ ट्रेनर, बट आई डिड पार्टनरशिप विद समबडी. तो मैंने वहां Right. से इधर से क्लाइंट्स भेजती थी, एंड दे जस्ट, कहते हैं ना कि वहां से सारे जाने जाके होता था. तो कोलैबोरेशन वर्क चल रहा था. बट Hmm. समहाउ बिकॉज ऑफ द सोसाइटी प्रेशर मैंने वो चीज को बंद कर दिया. आई वोंट परस्यू इट. देन आई वर्कड एज असिस्टेंट मैनेजर, क्योंकि मुझे पीछे फैमिली को सपोर्ट करना था. तो देयर वाज ऑलवेज, लाइक कह सकते हो कि एक लड़ाई चल रही थी, फैमिली प्लस करियर. सो अगेन वन मेजर इंसिडेंट हैपन. मदर मेट विद एन एक्सीडेंट. तो वहां से जर्नी फिर से चेंज हुई कि नाउ व्हाट, बिकॉज यू हैव टू हैंडल होम, राइट. बीइंग अ गर्ल हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, हमें वो देखना पड़ता है. फिर ऐसी लाइफ चल रही. Jasmine, I would just like to, interrupt you for a moment, because this is something which is very important. Our podcast is going to reach many people, especially women, young women will be watching this show. And here you're talking about, you're coming from a village and इतने सारे challenges था आपके life में. एक के बाद एक आप राइट. challenge को आपने, face किया था. And did I hear you correct saying that your mother is a single parent, यस, शी इज अ सिंगल पेरेंट. and in spite of that, she educated you, and then in spite of all these challenges, you kept on growing. So, राइट. आपको क्या लगता है, which was that one reason, like, or maybe what is that one thing which you will attribute कि इतने सारे आपको ना breakthroughs मिलते गए life में, and what is this? That opportunities came your way, and instead of backing off, then you accepted all those. तो क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? I आई want गेस ये people there चीज to आपके. understand, कि what kind of a mindset you had, what kind of a philosophy that you were following, कि आप ना जैसे जैसे situation challenges आते गए, you kept on growing instead of giving up, instead of staying in problems or fear. I want you to talk about that, Jasmine. Of course, Sarla, I guess if I could help somebody to come out of that, कहते हैं ना, वो एक स्पेस हो जाता है जहाँ पे हम लोग ऐसे कुकम टाइप फील करते हैं कि अब नहीं कुछ हो सकता. तो लाइफ आपको बहुत सारे सेटबैक्स देती है व्हेन यू हैव अ बिगर ड्रीम्स. तो दैट्स व्हाट आई बिलीव कि आपको अगर लाइफ में ग्रो करना है तो पहली चीज, कभी भी अपने ड्रीम्स के ऊपर गिव अप मत करो. दिस इज द फर्स्ट रीजन. एंड सेकेंड रीजन मैं ये बोलती थी कि मैंने जैसी फैमिली में मैं पैदा हुई, मैंने जन्म लिया, वो मेरे हाथ में नहीं था. बट Right. माई हैंड इज ऑलवेज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज,
कि मैं अपनी लाइफ को कैसे मोल्ड करना चाहती हूँ। तो मुझे एक राइट। एग्जाम्पल सेटअप बनना था, और पीछे से की ये चीज थी कि आई वांट टू गिव माय मदर प्रिंसेस लाइफ, हम्म। कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। तो दैट वाज द सेकंड रीजन। फर्स्ट तो ऑफ राइट। कोर्स मुझे ये था कि मुझे ये मीडियोकर लाइफ नहीं चाहिए। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि आई ऑलवेज गो फॉर अ वर्क एंड चेज फॉर अ वर्क, कि मुझे ये जॉब करना है, ये नहीं करना। आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय ओन। तो वो एक पीछे राइट। रील था, आगे बढ़ने की चाहत बहुत बड़ी थी। तो उसके आगे सारी चीजें बहुत छोटी लगने लगी थी लाइफ में। Well, who तो was दैट वाज द your, टू रीजन। motivating person, or who inspired you, कि इस जर्नी में अकेले तो आप कर नहीं सकते, आपको हमेशा किसी ना किसी एक मेंटोर की जरूरत है, या समथिंग लाइक, सो हु वाज योर मेंटर एंड हु ट्रेन्ड यू, हु कोच्ड यू, डिड यू हैव अ मेंटर? उस टाइम पे मेरे पास फ्रैंकली कोई भी मेंटर नहीं था, बट राइट। ये था कि मुझे कुछ बनना है। हम्म। एंड फ्रैंकली सरला, यहाँ पे इस एरिया में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तब नहीं थी। अगर आप एक राइट। विलेज एरिया में आते तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज कम होती है। एंड जिस टाइम पे मैंने अपना फर्स्ट स्टेप लिया था ना, कि आई वेंट टू गुड़गांव फॉर माय स्टडीज, उस टाइम पे लोग यहाँ राइट। से लड़कियों को बाहर पढ़ने भी नहीं भेजते थे। सो करेक्ट। आई फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने वो एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया था। हम्म। तो आई हम्म। वॉज द हम्म। फर्स्ट पर्सन इन माई विलेज जो सब चीजें कह लो ना, कि सब हदें तोड़ के आगे बढ़ने की चाहत में था। whenever the people oppose me na, and especially when people say being a girl you won't do that, I said okay fine, let me do that. तो मेरे अंदर वो चीज थी कि मुझे आगे बढ़ना है। सो राइट। उसके बाद एक पर्सन है जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। शी इज माई नोन पर्सन, एक सर्कल में है, फ्रेंड्स में। शी इज एमडी ऑफ कॉन्टिनेंटल फेयरवेज। राइट। तो उनको देख देख के मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी ऐसा लाइफ स्टाइल चाहिए। सो हम्म। मेंटर नहीं भी होने के बावजूद वो एक इंस्पिरेशन फिगर बनी मेरी लाइफ में। एंड सेकंड वाज माय डेफिनेटली माय मदर। हम्म। बिल्कुल। what kind of a philosophy did you follow in life, कि आपके लाइफ का philosophy क्या था, because I'm very sure that you must be following something in life, एक तो philosophy होता है हर एक बंदे का, तो what is your philosophy in life? सरला फ्रैंकली मैं एक ही चीज में बिलीव करती हूँ, दैट इज नेवर गिव अप। Never give up. एंड उसके बाद लोग इसको जोड़ देते हैं कि यू आर रियली पैशनेट अबाउट समथिंग एंड समथिंग। बट आई ऑलवेज सी कि जब आपको कुछ बनना है ना, तब अपने ड्रीम्स के ऊपर गिव अप मत करो। आज नहीं तो कल पूरे होंगे, रास्ते चेंज हो हम्म। जाएंगे, बट गोल शुड बी द सेम। फेलियर को कभी आपने फेस किया है? बहुत बार। बहुत बार। जैसे वो भी बोल रही थी कि आई गेस फेलियर इज माय बेस्ट फ्रेंड। आई बिलीव लोग फेलियर से वाह। डरते हैं, मुझे आई टेक फेलियर एज माय बेस्ट फ्रेंड। जैसे मैंने आपको राइट। बोला कि 2016 में मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसको बंद किया। देन 2018 में बिफोर आई अगेन बैक वेंट टू सिंगापुर, उससे पहले भी मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट किया। क्योंकि मुझे ये राइट। लगता है कि जो हम खाते हैं वो अच्छा होना चाहिए। बिकॉज बीइंग इनटू आईटी हम लोग 12 12 14 14 घंटे काम करते हैं, प्रोफेशनल्स। एक राइट। अच्छी डाइट, दे डिजर्व ए गुड डिजाइन। तो वहां से वो स्टार्टअप स्टार्ट हुआ, बट अगेन मुझे उन चीजों का आइडिया नहीं था। हम्म। अगेन आई स्टॉप्ड इट। मैं हमेशा अपने पैर पीछे खींच लेती थी। वो कहते हैं ना, ये सेल्फ डाउट था कि कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। राइट। राइट। बट राइट। वो जो राइट। एक बिजनेस वुमेन बनने का बीज था, वो उस टाइम पे अंदर एक कह लो कि डल चुका था कि यस ऑफ कोर्स, कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है। बट हम्म। देयर इज नथिंग लाइक कि उसका कोई डेफिनेशन नहीं था कि व्हाट आई नीड टू डू। राइट। या Can you tell our viewers, the name of your entrepreneurship? What is your organization called? What is your academy called? I think I should definitely give you this opportunity to spread this word, where you're operating from, so that many people would understand. Many people would like to come and meet you, or maybe, online, offline. That we will come later. But what is it called?
It's known as a Jasmine Consulting. Jasmine Consultancy. Consulting, Oh, Jasmine not Consulting. consultancy. Consulting. Yes. Right, right. And how old is this Jasmine Consulting? 1.5 year. Oh, it's 1.5 years. And Right. many students must have come to you. बहुत सारे लोग आए होंगे जो business SMEs, you said SMEs, people who are Mm-hmm. having their own business and you're helping them to grow. Can you tell to all and share with all our viewers, कि transformation, बहुत सारे लोगों के अंदर हुआ होगा, तो which is the best one that you can remember, जो आपके दिल के बहुत करीब है, so that you felt very happy doing this for somebody. Okay. So I guess abhi recently there was one lady who she's working with me on her personal development side. वहां पे when she came to me, वो बहुत ज्यादा मतलब सेल्फ डाउट के साथ भरी हुई थी. She never Right. speak a word. And 1 month back कुछ बात हुई, उसके मैनेजर ने उसको कुछ सुनाया होगा एंड शी नो दैट शी इज नॉट रॉन्ग. तो वो उसके हस्बैंड उसके अंदर गलतियां निकालने लग गए. ही सेड, Hmm. आई वोंट ट्रस्ट यू एनी मोर. आई एम गोइंग टू टॉक टू जैस्मिन. शी विल गाइड मी कि वेदर आई एम राइट और रॉन्ग. जहां Right. पे वो अपने घर पे ये बात नहीं कर पाते थे कि उन्होंने मुझे एज अ कोच हायर किया हुआ है, वहां पे जाकर वो ये चीज बोल रहे हैं, आई एम गोइंग टू टॉक टू हर, क्योंकि वो मुझे रास्ता दिखाएंगे कि आई एम राइट और रॉन्ग. One of the memorable event, I guess, Yeah. Yeah. memorable thing in my journey. Yeah. So yes, there's a lady. She's working with me for her personal development. She want to be head of marketing or CMO kind of position in digital area. But the challenge was when she entered, she is full of self doubt. करना है कुछ, क्या करना है पता नहीं. So Hmm. that moment she told me I want to be a CMO. I said okay fine, I accepted being a coach. आपका यही एक वो होता है कि ठीक है, आपको जो करना है करेंगे. So I really worked hard on her, and last, I guess 1 month back, there was a moment when she told her husband कि मेरे को अगर किसी से believe है तो वो है जैस्मिन पे. She will guide Hmm. me. Right. तो जहां पे वो कभी भी अपनी फैमिली में ये भी नहीं बोलती थी yes she is taking coaching from my side, and afterwards she said okay I'm going to talk to her. तो वो चीज एक बेस्ट मोमेंट होता है जब आपके क्लाइंट्स आपके ऊपर फेथ करते हैं कि जो हमें बोला जाएगा, जो हमें सुनने को मिलेगा वो सबसे बेस्ट होगा. तो दैट Correct. इज द Correct. थिंग. एंड Just द one सेकंड moment. पार्ट वाज व्हेन Shruti, द. just one moment, Jasmine. Shruti, there's a lot of movement and disturbance in Jasmine's video. आपको भी लग रहा है? Okay. So, So yeah, second is Jasmine. like business. I was sharing the business owner experience. I guess that person was not serious at all. जैसे होता है ना, कई बार कई पर्सन हवा में आ जाते हैं. So I was conducting 7 days challenge for new founders, new clients, right? तो उसने उस टाइम पे आके एक एक्सपीरियंस शेयर किया that he has grown by 25% within a 6 month. अभी कंसिस्टेंसी नहीं थी बिल्कुल. आई गेस मंथली कई बार वो एक लेक्चर होता है, सिर्फ एक कोचिंग सेशन होता है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं. सो दैट इज लाइक रियली अ विन फॉर मी एज अ कोच. क्योंकि जब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हो ना, तो वो हर एंगल से आनी चाहिए. इट्स नॉट जस्ट फ्रॉम द सेल्स बढ़ रही हैं, आपकी कंपनी के लीड्स अच्छे आ रहे हैं. आई बिलीव इन सबसे ऊपर होता है जब आप टीम वाइज ग्रो कर रहे हो, जब आप अपने कंपनी का कल्चर बिल्डअप करते हो. So when he told this story in front of other people, that is another win for me in last 1 month. Hmm. Over to you, Sarla. So, when you're talking about that, like as a business coach, Mm-hmm. Jasmine, so you just mentioned, Mm-hmm. कि आप ना सिर्फ बिजनेस के बारे में आपको कोचिंग देना होता है, बिकॉज आई डोंट थिंक वो अकेले ग्रो नहीं कर सकते हैं, लाइक सो व्हाट आर द नहीं. अदर एरियाज विच यू थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट
बिजनेस ग्रो करने के लिए, टू बिकम अ सीईओ, टू बिकम एन एमडी, टू बिकम अ वीपी। तो उसके साथ साथ व्हाट एल्स आर यू, व्हाट एल्स आर यू helping people in refining and polishing? As a coach, what is your role then? आई गेस दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि कभी भी कहते हैं एक फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए, तो किसी भी कोचिंग की फाउंडेशन होती है पर्सन की पर्सनल ग्रोथ के ऊपर। सो वेन एवर वी Absolutely. स्टार्ट अ बिजनेस कोचिंग, हम सबसे पहले कुछ भी करने से पहले उसके माइंडसेट पे वर्क करते हैं फॉर 3 मंथ्स, 2.5 मंथ्स टू 3 मंथ, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन प्रोग्रेस, वो कितना Right. अच्छे से लेता है। क्योंकि इन दीज 3 मंथ्स ओनली वो उसके अपनी स्ट्रेंथ्स को फाइंड आउट करता है, उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करता है कि उसके लिए क्या बेस्ट है। क्योंकि जब तक हम लोग अपनी वैल्यूज के साथ मैच करके अपने काम को नहीं लेंगे, टिल दैट टाइम वी आर नॉट एबल टू सक्सेस। कभी आपने ये तो नहीं सुना कि हम लोग ये कह देते हैं कि भाई फायर लगा दो, लकड़ी बाद में डालूंगा। फायर को ये तो नहीं कहते ना कि फायर फायर तू चल जा, मैं लकड़ी बाद में देता हूँ। पहले हम लकड़ी डालते हैं, फिर फायर को हम लोग चलाते हैं। तो दैट्स द वे। कोई भी चीज को करने से पहले हम लोग अगर कहीं स्टक होते हैं, तो दैट इज आवर माइंडसेट, हमारे इंटरनल डाउट्स। तो जब तक वो क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक सक्सेस नहीं है। दैट इज द वन एरिया आई गेस। Absolutely. I think you're very, very correct, because mindset को नहीं चेंज करेंगे तो एक ब्लॉकेज होगा। उस ब्लॉकेज को रखते हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। That must be that only one एग्जैक्टली। thing which is stopping them from growing from where they are to where they want हम्म। to be. And राइट। कई बार होता है, you may be very intelligent, you may be very knowledgeable, and you may have lot of degrees and experience, but फिर भी खुद के लाइफ में क्या हो रहा है ना, we are not able to see. So a coach is, I think, very important, to help that person, in seeing, that ये जो darkness है, जो हमारे सामने जो अंधेरा है, तो उसको पहचानने में, उसको निकालने में कोच का हाथ बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत बिल्कुल बिल्कुल सर का। इसको हम बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। व्हाई विराट कोहली नीड अ कोच, व्हाई इंडियन यस, टीम नीड्स अ कोच। वो भी यस, राहुल द्रविड़ जो रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने आई गेस अपने टाइम पे कभी कुछ नहीं इतना बड़ा अचीव किया होगा, बट स्टिल एब्सोल्युटली। व्हाई दे नीड अ कोचेस, क्योंकि कोचेस हेल्प देम टू फिगर आउट अ ब्लाइंड स्पॉट्स। जो या, ब्लाइंड स्पॉट्स को हम कवर अप करके आगे लाइफ में बढ़ते हैं। करेक्ट। In fact, many people might not even, admit कि उनके blind spots हैं, because this is not very, people will think I know everything. मैं इतने साल से मैं कर रहा हूँ, तो coach को क्या मालूम होगा, why should I even go? Simple thing. Many times, even I also, question people, parents especially, mothers especially, like when they ask, why a coach? Why should we go and learn? अरे, when I'm doing yoga, with a guru, they say, why you know everything, you do yourself. तुमको गुरु की क्या जरूरत है योगा करने के लिए? So I tell them, okay, you have a child. How old is a child? 4, 5 years old. Is a child going to school? Yes. What is the child learning? Alphabet. ABCD सीख रहे हैं, 1 2 3। क्यों आप नहीं सिखा सकते हैं घर पे? You can teach your child ABCD 1 2 3. आप, I think, third, fourth, fifth तक आप आराम से सिखा सकते हैं. But still, you want your हम्म। child to go to a school to learn in a professional way from a professional. एकदम। And so I think always, it's always, I believe, leave the job to the expert. So if you are an expert as a coach, I will not then hit my head कि मुझे क्या करना है, बस मैं कोच के पास मैं जाऊंगी, this is what I need to do, now you guide me. So I think, 50% of the battle is won जब आपको पहचानते हैं कि हाँ, आपको कोच की जरूरत है. And that coach, if I hold that coach's hand, that coach will be able to take me आगे. So absolutely, you definitely people. पहले के जमाने में coaching and all was not there. It was not so popular. But now I think हर एक फील्ड में आपको कोच, हर एक चीज में, है ना? And you are specializing in the बिल्कुल। business transformation coach. Is there anything else also that you work on people, other than business coaching? Is there anything else also, Jasmine, that you are doing through your आई एम नॉट Jasmine Consulting? यस, वी आर रनिंग अ पॉडकास्ट जहाँ पे हम लोग कोचेस के इंटरव्यू लेते हैं, स्पेशली टू अदर कोचेस की हाउ दे आर डूइंग, वो कैसे लोगों की लाइफ में प्रोग्रेस लेके आ सकते हैं, कैसे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगी विद द हेल्प ऑफ कोचेस।
तो वो सारी right, चीजें चल रही हैं, एंड साइड बाय साइड आई एम प्लानिंग टू रन retreats फॉर द बिजनेस ओनर्स, जहाँ पे आके वो right, लोग एक हेल्दी नेटवर्किंग कर सकें, सो दैट कि उनको भी एक ग्रोथ मिलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं लाइक माइंडेड पीपल अट्रैक्ट लाइक माइंडेड। तो वो जो लाइक absolutely, माइंडेड का सर्कल होता है ना, तो वो बहुत रिक्वायर्ड है। जनरली वी हैव अ सोशल सर्कल जहाँ पे सब तरह के लोग हैं, बट अगर right, हमें स्पेसिफिकली हमारे जैसे लोग मिल जाते हैं ना, तो हमारी ग्रोथ बहुत आगे बढ़ती है। बीइंग अ hmm, कोच, आई एम इनटू कोचिंग कम्युनिटी, एक से ज्यादा कोचिंग कम्युनिटी में हूँ। सो व्हेन आई बी देयर ना, तो ऐसा नहीं होता कि आप कुछ बोलने जा रहे हो, जब आप कुछ करने जा रहे हो, यू जस्ट बी देयर टू लिसन। आप उन लोगों से सुन के भी बहुत कुछ सीखते हो, आप खुद भी एज अ पर्सन ट्रांसफॉर्म होते हो। तो आई वोंट hmm, से दैट कि हमारी लर्निंग खत्म हो गई, नहीं। वी एज अ कोचेस हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीलर्न ईच एंड एवरीथिंग। right, जमाने के साथ साथ हमें भी चलना पड़ेगा। तो दैट इज अनदर थिंग। एंड यहाँ पे आपने एक चीज पहले बोली थी कि सोल्यूशन, आई मस्ट से कोच सोल्यूशन प्रोवाइडर नहीं होता, कोच सोल्यूशन इनेबलर होता है, जो लोगों को right, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सो इनेबलर, वी विल हेल्प यू टू फिगर आउट कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ज्यादातर आंसर आपके पास खुद है, बट right, वी विल बी देयर एज अ अकाउंटेबल पर्सन। पहले right, सोल्यूशन एनेबलर, सेकंड अकाउंटेबल, थर्ड ब्लाइंड स्पॉट को फिगर आउट करने वाले। तो दिस इज अ वे वी हेल्प पीपल टू ग्रो इन देयर लाइफ, जहां पे जाके लोग बहुत ज्यादा, कह लो कि चीजों को एडमिट ही नहीं करते, एज यू सेड कि दे वोंट एडमिट कि उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो वो मैं बहुत बड़ी हो जाती हूँ, दैट्स ऑल। बट दिस इज अ जॉब ऑफ अ कोच। I have one interesting question for you, Jasmine. Do you also coach men and women? Like, so if you're coaching both, then what are the challenges you face, jab, a man is coming to you for coaching? Is it easy? आई How गेस difficult is it? Or do you specialize only in coaching women? फ्रैंकली मैंने ऐसा कुछ नहीं रखा, वुमेन और मैन। मेरे लिए मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो वैसी हुई है कि देयर इज नो डिफरेंस, एंड आई Right. ट्रीट देम इक्वली। अगर मेरे पास कोई रोके आता है ना, या मेरे पास ये चैलेंजेस है बीइंग अ वुमेन, तो आई वाज लाइक, वो कहते हैं ना, सॉरी आई एम सेइंग इन अदर वे, बट वो डंडा Yeah. मास्टर होता है ना पुराने टाइप का, तो वो बन जाते हैं। डोंट से दैट बीइंग अ वुमन यू कांट डू इट, बिकॉज आई नो Right. हाउ I have overcome my challenges. So I always try to inspire them. Now, coming back to your question, I feel more comfortable with boys as well. Boy, क्योंकि वो लोग, वो के जो perceptions होती है ना, वो बहुत अलग वे से आती है। तो दैट इज अनदर रीजन। आप जब उनके साथ काम करते हो ना, तो कुछ चैलेंज, डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंज फेस नहीं होता। वुमेन्स के साथ एक्सक्यूजेस ज्यादा आते हैं, बट विद Hmm. बॉयज यू हैव लाइक, इफ दे आर सीरियस दे विल डेफिनेटली पे अटेंशन, दे विल लिसन टू यू। Hmm. बट Hmm. व्हेन यू कहते हैं ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते ही हैं। मेरे साथ भी हुआ था, एक पर्सन आया, ही वाज लाइक लाइंग ऑन द बेड ड्यूरिंग द कॉल एंड ऑल। आई सेड, सर, if you want me to coach you, please be respectful towards me. That's all. आप सही से बैठिए, आप कोचिंग ले रहे हो, आप एक क्लास को रिस्पेक्टफुल मैनर के थ्रू लेके चलिए। तो ग्रेजुअली यू विल लर्न कि हाउ यू कैन ओवरकम दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस, ये आएंगे। सो आई एम रेडी टू Yeah. एक्सेप्ट दैट। Right. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yeah, yeah, definitely, definitely. You have given an example very boldly, very bravely. You have, given an example. Because yes, in our country, I don't know about other countries, but definitely here, women are seen in from a different eyes. So especially now, if you're going to coach, that too, if you're going to coach men, so I was really wanting to know how easy, how difficult is it? Do they give you that kind of respect? Like going to a man, and it's different. Going to a lady is different. Yeah. Of course, you know, when we are doctors and all, we have डेफिनेटली।
women engineers, we have women architects. Nowadays, it's there in every field. We have equal men and women are हम्म there equally working. Yeah. Bilkul, bilkul. So, Jasmine, what are your future goals and aspirations when it comes to your career, when it comes to your business, your entrepreneurship? What is your future goal? सरला लोग बहुत सारे गोल्स बनाते हैं, मैंने बहुत सिंपल सा रखा है कि आई रियली Right. वांट अ क्वालिटी लीड्स टू वर्क विथ, जो बहुत ज्यादा इंसान वर्क करना चाहते हैं, एंड मैक्सिमम आई कैन हैंडल 20 to 25 पीपल्स पर मंथ, Hmm. मैक्स ऑन द स्पेक्ट Hmm. व्हाट आई हैव कैलकुलेटेड, तो मुझे उससे ज्यादा नहीं करना, एंड दैट इज माय थिंग। एंड सेकेंडली, इन फ्यूचर आई एम प्लानिंग टू कहते हैं ना, एक लीडर्स को और बनाओ। वी वॉन्ट क्रिएट, Hmm. वी लाइक वी वॉन्ट एज अ लीडर कि लोग हमें फॉलो करें, बट आई रियली वॉन्ट दैट आई एम एबल टू क्रिएट मोर लीडर्स इन अ सोसाइटी जो जमाने को लीड कर सके इन अ बेटर वे, इन अ बेटर डायरेक्शन, Hmm. चाहे वो फिर कंपनीज के लिए हो, चाहे वो वैसे इन जर्नल हम लोग क्रिएट कर सकें। सो लीडरशिप इज माय मेन एजेंडा, एंड आई फ्रैंकली स्टार्टेड माय करियर व्हिच वाज लाइक अ ब्लफ, कह लो कि दैट इज अ लीडरशिप, क्योंकि इंडिया में लोग लीडरशिप को बहुत हल्के में लेते हैं, बट Right. थ्रू योर पॉडकास्ट आई रियली वांट टू से, आप एक लीडरशिप के लेसन को इम्प्लीमेंट कर लो, यू विल स्टार्ट फेसिंग सक्सेस विद अ 10x ग्रोथ। जस्ट वन Wonderful. सिंगल थिंग, आप अपने लाइफ में एक EQ का पार्ट इंप्लीमेंट कर लो, दैट EQ will help you to grow by 10x, that I can give a bet on this part, that much I am sure. Yeah. Since you have touched upon this EQ, दो लाइन उसके बारे में भी जरूर आप प्लीज शेयर करिएगा. देखो, EQ इज लाइक इमोशंस को समझना इन सिंपल लैंग्वेज। अगर आप अपनी कोई भी बिजनेस है, अपनी टीम को समझते हो, उनकी उनके इमोशनल वैल्यूज को समझते हो, एंड आपका इमोशनल वैल्यू क्या है, जब आप दोनों के इमोशनल वैल्यूज एक सेम प्लेटफॉर्म पे आते हैं ना, दैट्स विल स्टार्ट ग्रोइंग। Hmm. जब आप देखो ना कि आपके पास 10 पर्सन है, 10 पर्सन की टीम से लेके चल रहे हैं, 10 इंसान एक ही विजन को फॉलो कर रहे हैं विद द सेम इमोशंस, कितना ग्रो होगा। Hmm. एंड ये कब आएगा, जब आप अपनी टीम के इमोशंस को समझते हो, ये वैसे नहीं Hmm. है। टीम आपको तब समझती है जब आप उनको समझना शुरू करें, इट्स बहुत सिंपल फिलॉसफी है, आप अपनी Hmm. टीम का केयर करो, टीम आपके बिजनेस की केयर करेगी। Care for the team and the team will care for your business. That is, if डेफिनेट, you take care of the people, because business kya hai, it is only made out of, I think, all the people. The people only are business. So if we don't care about the एग्जैक्टली, people who are working, then definitely the business is going to, all the time there will be problems and challenges. And I think this is very important, especially since you're talking about leadership, organization, and obviously people aate hain usme. And if people are not, having the same goal, maybe they're thinking differently, but the leader has to make sure that he's taking everybody's ideas into consideration. तभी एक success हो सकता है उसका. Great. बिल्कुल। um, so how do you were talking about leaders, any one or two leaders that you follow, Jasmine, कि आपके लिए these are my ideal people, like you, and they are following the leadership qualities and they are having those qualities. uh, ऐसे कोई हैं जिनको आप फॉलो करते हैं? डेफिनेटली एक मैं ये बोलना चाहूंगी, मुझे स्टार्टिंग में लीडरशिप का आई गेस एल भी नहीं पता था व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ मैनेजर। तो राइट. बस ये होता था, दिल से करना है, जो करना है दिल से करना, दैट वाज अ मेजर फंडा। तो जो मुझे राइट. सही लगता था मैं वो करती थी, मैं किसी की नहीं सुनती थी। आई वॉज राइट. वेरी, कह लो कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा मैनेजर जिसको बैलेंस क्रिएट करना आता था बिटवीन अ हम्म. सीईओ एंड टीम। ना वो अपनी हद क्रॉस करते थे, ना टीम क्रॉस करती थी, दैट्स द मेन एजेंडा। सो राइट. यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, बट व्हेन आई क्विट माय जॉब आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट, तो वहां से जाके मेरा जो ज्यादा लीडर्स की तरफ झुकाव हुआ, तो वो फर्स्ट है महाराणा रंजीत सिंह,
सेकंड इज छत्रपति शिवाजी महाराज है। वाओ। आपको लीडरशिप सीखनी है ना, तो इंडिया से शुरुआत होती है। ये लोग कहते हैं कि बाहर से आई है लीडरशिप, नहीं। हम इंडियंस जो हैं सबसे बड़ी एग्जांपल है लीडरशिप के। ड्यूरिंग महाराज जी सिंह के पूरे उनके कह लो कि 40 इयर्स उन्होंने रूल किया है पंजाब के ऊपर, 40-45 इयर्स। देयर इज नो प्रिजन एट ऑल। So that is the best There is part. no, You can inspire from. can you repeat? There is Prison. no No prison. prison. Right, There is no prison. right. तो वो था। एंड अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में सुनते हो, द वे ही उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बहुत फ्लॉलेस थी। चाहे वो Hmm. नेवल वाली थी, चाहे वो इंटरनली स्पाई क्रिएट करना होता था। तो जैसे जैसे आप इंडियन लोगों को पढ़ोगे, लीडर्स को, यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, एंड पीपल आर नाउ सेइंग अबाउट सर्वेंट लीडरशिप स्टाइल। एंड छत्रपति शिवाजी महाराज एंड महाराज जी सिंह वाज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ सर्वेंट लीडरशिप। Hmm. तो ये चीजें अब तो हम So लोग और कहते हैं ना कि when you चीजें talk आ about रही हैं। servant leadership, it means that, if you want to be a good leader, then you first have to be a good servant. डेफिनेट You have to डेफिनेट serve the people. You have to serve the people. यस, वी आर हियर टू सर्व द पीपल। तो वो You have to एग्जांपल ये serve आ the जाती people. Right. है। Yes. Excellent. Very good. And any book that you have read which has inspired you, Jasmine, in your coaching or in your leadership, जो आप audience को आप share कर सकते हैं, that you have read this book that has inspired you, other than of course Chhatrapati Shivaji and Maharana Ranjit Singh. थैंक यू। मैंने अभी उनके बारे में इतना कुछ बुक्स में डिटेल में पढ़ा नहीं है। मेरे पास उनकी बुक्स हैं, वो बहुत किसी और के लिखी हुई है, इट्स नॉट डिटेल्ड वन। Right. तो बट अगर आपको मुझे लगता है मेरी एक बुक ने जो लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है, दैट इज द 17 सक्सेस प्रिंसिपल बाय नेपोलियन हिल। तो Right. वो बुक जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, या कह लो कि जो आज लोग बात करते हैं उसको, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो उसका सबका बाप है वो बुक। तो दैट इज द वे Really? दैट बुक इज लाइक वहां। यस, वो आपको सबसे पहले, अगर आपने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ा हो, वो बोलते हैं थॉट्स आर थिंग्स। आई नेवर लाइक, मैं कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतना प्रमोट नहीं करती, बट स्टिल अगर मैं अपनी लाइफ में देखूं तो जब मुझे इसका एबीसी भी नहीं पता था, तो दिस इज दैट आई एम मैनिफेस्टिंग माय लाइफ। चाहे वो मेरी ग्रेजुएशन हो, चाहे एक अच्छा करियर हो, आई वाज लाइक ऐसे ही हवा में बातें करती थी कि मैं तो इंडिया में एक सिटी से दूसरे सिटी जाऊंगी विद ऑन फ्लाइट, मैं कभी ट्रेन में ट्रैवल नहीं करूंगी। सो अब वो ऐसा ही होता है। आई नेवर गेट अ चांस टू ट्रेवल बाय ट्रेन। सो दिस इज द वे वी चेंज। तो जितना आप इन सक्सेस प्रिंसिपल को पढ़ोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे यूनिवर्सल लॉ जो है आपकी जिंदगी में रोल प्ले करता है, एंड हाउ Right. पावरफुल इट इज। So when you are taking right action towards your dream and goals, you will definitely achieve your life, achieve your desired goals. Right. As an entrepreneur, आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? No, you are an entrepreneur now. Earlier, you have tasted both, employee also, entrepreneurship also. आपको being an entrepreneur सबसे अच्छा क्या लगता है? Independence. इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ कि मुझे जो करना है मैं आजाद हूँ करने के लिए। मुझे मेरी टीम को जैसे डेवलप करना है मैं वैसे कर सकती हूँ। तो दैट्स द बेसिक वे। मुझे जस्टिस करना पसंद है। जस्टिस इन द सेंस कि आई रियली डोंट लाइक, अगर कुछ गलत हो रहा है आई कैन रेस माई वॉइस सिंपली। तो मुझे एक ऐसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन करनी है जहाँ पे पीपल वुड लव टू वर्क इन फ्यूचर। दैट इज माई ड्रीम। जो भी आप लास्ट टाइम पूछ भी रहे थे, तो नाउ इट्स कमिंग टू Yeah, दैट पॉइंट exactly. कि दिस इज व्हाट आई लव अबाउट Yeah, एंटरप्रेन्योरशिप, कि यू कैन बिल्ड योर ओन टीम। बिकॉज आप right, जिनके साथ काम करते हो वो आपकी एक अनदर फैमिली बन जाती right. Okay. So you were talking about your dream. You were talking about your dream, Jasmine.
you were sharing about your dream. You were sharing about your हम्म dream, Jasmine. So please come again on the dream. ड्रीम इज लाइक कि ऐसी कंपनी है हो जिसमें सब लोग अपना आके मतलब खुद से चाहें कि हमें काम करना है आके, वेयर दे वांट टू स्पेंड देयर लाइफ, रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, Right, चाहे वो ग्रूमिंग के टाइम पे हो कैसे हो, क्योंकि जनरली मैंने लोगों को कंप्लेन करते सुना है कि दे आर लीविंग द कंपनीज बिकॉज ऑफ कि वहां पे ग्रोथ नहीं मिलता। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पे उनको रेगुलर ग्रोथ का मौका मिले, अर्निंग्स अच्छे हो, क्योंकि कंपनी सिर्फ कंपनी नहीं होती, वो आपकी एक अनदर फैमिली होती है जहाँ पे आप hmm, अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हो। एंड अगर आप उनको अच्छे से ग्रूम कर पाते हो, दैट इज द बेस्ट वे यू कैन गिव बैक टू द सोसाइटी। right. Hmm. What does success mean to Jasmine? सक्सेस, नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। आई नीड टू थिंक अपॉन सक्सेस है क्या। कई बार ना, we are always busy, chasing something in life. But really we don't know कि शुरू में ही क्या, can we tell this is what, if I achieve 2 crore bank balance, I'm successful. If I have 100 people in my company, I'm successful. Or if I have 100 crore turnover, I'm happy. So what is Jasmine का जो definition of success है, वो क्या है? You can take a minute. मेरा मेरा डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है रेगुलर उठो और अपने ड्रीम की तरफ काम करो, दैट इज अ सक्सेस। Yeah. क्योंकि Work towards your dream. अगर यस, वर्क टुवर्ड्स योर ड्रीम, सक्सेस इज बेसिकली अ जर्नी। हम Yeah. लोग उसको डेस्टिनेशन समझ बैठते हैं, जो मुझे लगता है हमारी सबकी बहुत बड़ी भूल होती है। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, सक्सेस इज अ जर्नी। अगर आप अपनी Right. जर्नी को आज एंजॉय नहीं कर रहे हो, देन आप डेस्टिनेशन के पहुंचने के बाद भी इंजॉय नहीं करोगे। ये आपका एक स्टेट ऑफ माइंड है कि मेरे को कैसे देखना है, किसी चीज को देखने का नजरिया हो सकता है। सो आई गेस यस, यू कैन कंसिडर दैट। So is Jasmine enjoying the journey? ऑफ कोर्स, आई वुड से कि यस, यहाँ पे इमोशनल टर्मोइल नहीं है, बहुत ज्यादा होते हैं, बट एट द एंड जब आप हर दिन कुछ बेहतर करते जाते हो, यू फील लाइक यू हैव अचीव समथिंग। Right. सो वो बहुत बड़ी चीज है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। सबसे बड़ी चीज है कि ये एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर कब क्या आएगा यू वोंट इवन एक्सपेक्ट। Right. And what kind of a message would you like to give the people who are watching you today? Like a final message for people, especially those people थैंक यू। जो entrepreneurship में, they are stepping into entrepreneurship. And nowadays now, most of the people want to get into business and they want to get into their own work because they want to be free, they want to have time freedom, they want to have money freedom. But there's nobody to guide them properly. They're all lost somewhere. So what kind, you know please, share with our audience and the viewers uh, some kind of guidance they would need if they are starting their own डेफिनेटली। business. Startup लोगों के लिए क्या इतना पैसा जरूरत है? Many people think, oh, I need 10 lakhs to start, maybe I need 20 lakhs to start, maybe I need an office space to start, maybe I have to do MBA to start. तो आपके हिसाब से, if somebody is has a dream of starting something on their own, so can you tell from your experience? Of course, I will try to give them because I think so. हम इंसान इतने भी बड़े नहीं बन जाते जहाँ पे कहीं एडवाइस दे सके, बट फाइनली आई रियली वांट टू से कि मैं एक विलेज से हूँ एंड आई एम रियली प्राउड टू बी अ विलेजर। एंड Right, right, यहाँ से मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करी हूँ, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं। गाइज डोंट थिंक सो कि आप लोग गांव से कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते हो। इट्स अ टाइम, आप विलेज में रह के नेचर को एंजॉय करते हुए अपने स्टार्टअप्स को स्टार्ट करो।
वहां पे आपकी कॉस्टिंग भी कम आएगी। डेफिनेटली रिसोर्सेज शॉर्टेज होते हैं, रिसोर्सेज कभी भी पूरे नहीं होते, बट क्या आप रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो? पहला क्वेश्चन आप सब लोगों से, अगर आप रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो तो आप इस जर्नी के लिए रेडी हो। अगर आपके पास 75% रिसोर्सेज हैं, स्टार्ट। क्या होगा? फेल फास्ट, फेल फॉरवर्ड। जितनी जल्दी आप फेल होगे, अपने फेलियर से सीखोगे एंड आप उसी एक्शन टुवर्ड्स अपने गोल की टुवर्ड्स काम करोगे। तो ये तो हो गया एक एडवाइस सेक्शन। अगर हम बात करते हैं जनरली, देयर आर स्टेप्स। फर्स्ट, हैव अ गोल, देन वर्क पैशनेटली टुवर्ड्स योर गोल। राइट। ठीक है, जब गोल राइट। है, पैशन के साथ आप काम कर रहे हो, जितने मर्जी फेलियर्स आ जाएं, जितने मर्जी सेटबैक्स आ जाएं, overcome each and every setback and just have one motto: never give up. And afterwards, जब आप सक्सेस को अचीव कर लेते हो, अपने गोल्स को अचीव कर लेते हो, बी हम्बल, बी ग्राउंडेड। क्योंकि जो सक्सेस का मजा नीचे रह के मानने में ना, वो ऊपर चढ़ के नहीं है। सो बी ग्राउंडेड एंड बी हम्बल एट ऑल द मोमेंट्स, सो दैट्स वेयर यू फील लाइक यू आर सक्सेसफुल। सक्सेस ना शोर नहीं मचाती, सक्सेस शांत रहती है। अगर आप कहते हैं ना ज्यादा पैसा, जो सरला ने अभी बोला ना, 100 CR, तो आप ये सोचो वो कॉइन्स नहीं है जो खड़केंगे। तो शोर नहीं मचना चाहिए, सक्सेस शुड बी साइलेंट। So that's all I want to say to all the lovely audience. I think what you want to say is like, I heard very recently somebody, famous personality saying, never let failure go to your heart and never allow success to go to your head. तो दिल में नहीं लेना है, फेलियर हो गया तो दिल पे नहीं लेना है, और सक्सेस हो गया तो डोंट लेट इट गो टू योर हेड कि आई एम वेरी सक्सेसफुल. So I think this is having said that, and I would like to thank you, Jasmine, today for taking time out and sharing with us, with all the viewers, your thought philosophy, your struggle, your success. I will say that you're already successful because you have traveled a long distance in spite of coming from a small town, and how you are an inspiration to so many people. Because sitting in the city and having all the facilities and then growing is one thing, but coming from a small town where the people mindset, especially, you have to work with mindset. I think you will go a long way, and I can see that you're very passionate and full of energy to fulfill your dream. And I wish you all the best, Jasmine. Thank you so much. And maybe you could Thank say you a so word much. about, you could say a few lines about Soil Cup also. Okay. So thank you so much, Sharla, first of all, कि आपने ये opportunity मेरे तक यहाँ तक लेके आए हो. I guess you just told me about this thing, and because of you, I'm here with these amazing people, Soil Cup, and I wish Yes. them success for the future, because the way whatever they are doing is really amazing. क्योंकि हर Right. पर्सन, जनरली बोला जाता है लोग चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं, बट आई बिलीव जो इंसान किसी पर्सन की जर्नी को लेके आता है, उनको दुनिया के लिए ऑडिबल नाउ. Yes. Now you can just say the last two lines about Soil Cup. Just about Soil Cup, not about me. तो नहीं, आप आई गेस you have made me really comfortable during the conversation, and that's a good thing, so thank you so much. And the Thank you soil so much. cup, इसलिए भी thank you for capturing me in this stage, जहाँ पे अभी अगर कोई, कई लोगों के लिए सक्सेस की डेफिनेशन बहुत बड़ी होती है, सो आई माइट वोंट से दैट आई एम दैट सक्सेसफुल, बट अगर आप लोग ये प्लेटफॉर्म उन सबको दे रहे हो जो अभी अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज अ बिग इंस्पिरेशन. Right. एंड दिस इज अ बिगर इम्पैक्ट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट इन अ सोसाइटी.
जनरली लोग उनको रिकॉर्ड करते हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, बट आई गेस हमें उन सब से तो सीखना चाहिए, बट जिनकी जर्नी, जो लोग चैलेंजेस को फेस करके ओवरकम करके आगे बढ़ रहे हैं, वो लोगों को और भी चीजें सिखा के जा सकते हैं. सो Yes, आई wish them all the best for their good work, बिल्कुल. and I hope you guys are continuing this good process, It and we will. are really proud of you. Thank you Thank you so so much. much. Thank you so much. तहे दिल से शुक्रिया. And what I also really appreciate about Soil Cup is it's very, even if a great personality comes on podcast, what we think is, can we be like them, that big celebrity, and kitna saal lag sakta hai? But if you're, projecting and sharing all those people from small cities, small towns, and, little steps they are taking to reach a destination, Right. that is, achievable. People will relate to Jasmine more. If I'm going to see, film stars and big businessmen, I don't know whether I'll be able to be like them. But if I see Jasmine, I say, okay, I can also be. If Jasmine can do this, then I can also do this. So that's why it's very important. And I think salute to, Soil Cup, the organization for Definitely. giving this platform to people like you and me. And thank you so much for this time. See you later. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye.